তো ভাৰত সুপাৰ পাৱাৰ হ'বলৈ হ'লে এই মহিলাসকলক এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰিব লাগে। এইটোৱেই হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ স্বপ্ন আৰু সেই সপোন ৰাজীৱ গান্ধীয়েও দেখিছিল। সেয়েহে পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনত 33% দিছিল। আৰু আমিও মোৰ মহিলাসকলৰ প্ৰতি অলপ মৰম আছে কাৰণে ময়ো 50% মহিলা আমি দিছোঁ। চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলতো আমি দিছোঁ 30%। আজি সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আমি কিয় কৰিছোঁ? আজি মহিলাসকলক সেলফ হেল্প কৰি আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আজি অসমৰ মহিলা আগুৱাই গৈছে। এইবিলাক এওঁলোক হৈছে সতী জয়মতী, ৰাধিকাই কওক, আজি আমাৰ মূলা গাভৰুৱেই কওক, আজি সকলোৰে আমাৰ সন্তান। এইসকল আগুৱাই যাব, ইয়াত সন্দেহ নাই। এইটোৱেই হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ সপোন। তেখেতৰ সপোন হৈছে বিশেষকৈ দুখীয়া মহিলাসকলক, সৰ্বসাধাৰণ মহিলাসকলক, আমাৰ ফিল্ম ষ্টাৰসকলক নহয়। আমাৰ কাৰণে এইবিলাকেই ফিল্ম ষ্টাৰ। মই আগতেই কৈছোঁ, আমাক হেমা মালিনী নালাগে, মোৰ কাৰণে এইখিনিয়ে হেমা মালিনী। মই আজি মহিলাসকলক খেলা হওক, নাচে গানে বাজে সকলোকে আজি পাৰ্গত হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। খেলা ধূলাতেই হওক, প্লেন চালনতে হওক, ছায়েন্সতে হওক, সকলো দিশতে আজি মহিলাসকলক ইয়াৰো এতিয়া আমাৰ অজন্তা নেওগ মন্ত্ৰী আছে, আজি প্ৰণতি আছে, ৰাণী আছে, এই সকলোবিলাকক আজি আমি আগবঢ়াই নিবলৈ বিচাৰিছোঁ। মই দীঘলীয়া নকওঁ। আজি আপোনাসকলে সকলো প্ৰশ্ন তেখেতক কৰিব পাৰে যে কি বিচাৰিছে মহিলাসকলে, আৰু নিশ্চয় মহিলাসকলে যি বিচাৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে তাকেই দিব। আৰু মই ভাবোঁ যে মহিলাসকলে খোলাখুলিভাৱে, আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ নিচিনা খোলা মনৰ মানুহ নাপাব। আপোনাসকলে খোলা মনৰ পাইছে। এতিয়া আপোনাসকলে সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিব, যি আপোনাসকলে বিচাৰিছে। নিশ্চয় আজি মহিলাসকলৰ সমস্যা আছে, বহুত সমস্যা। এই বুজ ল'বলৈ আহিছে, আহি সমাধান কৰিবলৈ আহিছে। তেখেতে আহি ভাষণ দিবলৈ অহা নাই, আহিছে মহিলাসকলৰ সমস্যা বুজি সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ বিচাৰিছে। মই শেষত আকৌ সকলোকে ইয়ালৈ যি ধৰণে আহিছে সঁহাৰি জনাইছে, ইয়ালৈ আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী যোশীও আহিছে, সভাপতি ডাঙৰীয়া কলিতাও আহিছে, অবিনাশ আমাৰ পাণ্ডে, সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ মাজত আছে AICC জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী CP যোশী ডাঙৰীয়া, তেখেতক মই আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত আছে আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়া, তেখেতকো আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত আছে সম্পাদক AICC সম্পাদক অবিনাশ যোশী ডাঙৰীয়া, তেখেতকো মই আমাৰ ইয়াত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্লিজ কাম ছাৰ। আমাৰ মাজত আছে ৰাণা গোস্বামী বিধায়ক, তেখেতকো মই আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। Now we are going to start our program with Rahulji. Rahulji, I must say that all of us have been waiting here very eagerly and very patiently for you. And you must applaud the audience here, the women here who have been waiting for you very, very eagerly. They have a lot of questions for you. আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক কম যে ক'ব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে অসমীয়াটো সুধিব পাৰে, মই সেইটো ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি দিম। কাৰ কিবা ক'ব লগা আছে কওকচোন, আপুনি কিবা ক'ব নেকি? কওক। You can raise your hand. Hello. Kwa? First introduce yourself. I am Devojani Kondoli. I am a student of MSc Life Sciences in Dibrugarh University. First of all, I would welcome our Chief Minister Tarun Gogoi sir and all present here. Then I would like to provide my warm welcome to Rahul Gandhi ji. Sir, we are very much happy to see the steps that you have taken, like 50% reservation for women, and you have taken respective steps for empowerment of women. Sir, my question is that, what is your plan regarding the handloom industry of Assam, which is a very great dresses you can see over there.
So what are the initiatives? Although these are very popular throughout Assam, but these are not exported definitely enough. So what are the steps you would like to take for this, for uplifting the handloom industry of Assam to such an extent that we would feel too proud to be an Assamese and will feel too proud to wear an Assamese muga sari or muga dress or pat dress. That's it, sir. I would like, মই এতিয়া আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে অকল প্ৰশ্নই নুসুধিব, তেখেতৰ লগত মত বিনিময় কৰিব, তেখেতক ছাজেশ্যনছ দিব, তেখেতে আপোনালোকৰ ছাজেশ্যনছখিনি শুনি সেইবোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ পিছত সমস্যাসমূহ তেখেতে সমাধান কৰিব চেষ্টা কৰিব। আপুনি ক'ব? শ্ৰদ্ধাভাজন, আজি আমাৰ মত বিনিময় অনুষ্ঠানৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, সন্মানিত আমাৰ যোৰহাট লোকসভাৰ সাংসদ বি.কে. হেণ্ডিক ছাৰ, ৰাণী নৰহ বাইদেউ, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল, শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ ৰাহুল গান্ধীজী, আপোনালোক সকলোলৈকে আমাৰ যোৰহাটৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক সেৱা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই ৰাহুল গান্ধীজীয়ে আমাৰ যোৰহাটৰ মহিলাসকলৰ লগত মত বিনিময় এই কথাষাৰতে বিশেষভাৱে শান্তি অনুভৱ কৰিছোঁ, গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। তেখেতৰ ওচৰত আমি অসমৰ হৈ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। মহিলাসকলৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যথেষ্ট চেষ্টা সদ ইচ্ছাৰে বহুত আঁচনি লৈছে আৰু যদিও অলপ কৰিব লগা আছে বহুত লৈছে। সেইখিনিৰ ওপৰত আকৌ আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে মাননীয় যুৱ নেতাজনে আমাৰ অনেক আঁচনি বা আমাৰ মত বিনিময় বিচাৰিছে। মই তেখেতক সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত 2001 চনৰ পৰা অসমত মহিলা সবলীকৰণৰ এটা বছৰ হিচাপে ধৰি লোৱা হৈছে। তাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক যথেষ্ট আগুৱাই নিছে। আমাৰ স্থানীয় সাংসদ বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈদেৱৰ মহিলাসকলৰ ওপৰত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমাৰ সকলোকে আগুৱাই নিয়াৰ যি প্ৰচেষ্টাত আমি যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত। তথাপি মই আপোনালৈ এটি অনুৰোধ, আপুনি নিজেই কৈছে আমাক 50% দিবৰ বাবে, আমি অহা বিধানসভাৰ বাবে 50% আপোনাৰ ওচৰত আশা কৰিলোঁ, আহ্বান জনালোঁ। লগতে অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাটো হৈ যদিও আমাৰ বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ আমাৰ চৰকাৰে যথেষ্ট কৰিছে, তথাপি অসমৰ বানপানীৰ কাৰণে আপুনি এটি আৰু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ এইখিনিতে আহ্বান জনাইছোঁ। অসমখনৰ বাবে উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট থল আছে, এই থলখিনিৰ বাবে আপুনি মহিলাৰ উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে বহুত কৰিছে, তথাপি আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপুনি মহিলা উদ্যোগীকৰণৰ কাৰণে আমাক যেন আপুনি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু এই আমাক দিয়া আশা যাতে আপুনি নাপাহৰে, আমালৈ থকা মৰমখিনি যাতে আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈও নাপাহৰে, তাৰে মই আশা কৰিছোঁ। স্থানীয় সাংসদ বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈ, যুৱ নেতা যোৰহাটৰ বিধায়ক আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক ৰাণা গোস্বামীয়ে অনবৰতে আমাৰ লগত যিখিনি কৰে সেইখিনিৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জনাই মই ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগিব, গতিকে মই অকণমান কৈ দিছোঁ আপুনি কি কি ক'লে। She is saying that she is very happy with the government's work here, with the MP, with the MLAs, with the chief minister, but she says that for women to be more engrossed in industry, she wants more facilities for industrial growth so that women can be more involved in industry. And she also has talked about flood, which is a big problem here, that flood should be made a national problem and it should be looked into properly, which has not been given a national problem. It should be declared as a national problem. That's what she's saying. Aru kune kobo baido apunar Good evening and namaskar, Rahul Gandhi. First, I should appreciate you because your 2 days visit to Assam is extremely significant from the point of view that you are taking up the women issue, and along with that, you are thinking about the youth development who are our future. And that's extremely important to us. And your visit is giving us great inspiration to work more for the country. Mr. Gandhi, I just have a very humble suggestion before you. Since I am working in the field of education, myself, Professor Nilima Bhagavati, I work in Guwahati University in the Department of Education. Since I am associated with adolescent group, the youth power,
what I find that particularly the girls after at one stage at the secondary level, they are the dropouts. The dropout of girls is more in comparison to the boys. And at one time it happens that they get married or something happens to them, so the future is very bleak in front of them. So Mr. Gandhi, I have a suggestion before you that this group of girls who are dropout from the schools, say from the secondary school stage or from the higher secondary stage, they are motivated to upgrade their education and to upgrade their educational skills. If we can offer or if we can give them, some sort of brief diploma courses or certificate courses through university system in Assam particularly, I think it will be a great boon. It will be a great boon to the country as well as it will be extremely productive. So my humble suggestion you to that, if you can think about it for establishing an institution in the name of a university for girls, which is called Women's University in the line of SNDT University, where a number of courses, multiple courses are available for girls. That is my humble suggestion. And secondly, I want to just, I want to request you, in fact, that sometimes, since I have seen the patience of women today, extremely, extremely praiseworthy. Like sometimes if we go to Delhi on certain works or to meet you, because we have seen you are very considerate, you listen, and you give a very patient hearing. So is there any possibility to meet you in Delhi? And I hope that will be allowed to us. Thank you very much. I just want your suggestion, what your opinion regarding my first suggestion. Okay, thank you. Sir, I am Miri Smita Das. I am General Secretary Youth Congress from Jorhat Assembly, also a MP member. So it is seen that the percentage of women member in welfare board is less than the gents percentage. Do you think that it is necessary to take any steps in this aspect? If so, how can it be possible? Thanks. This is my question. नमस्कार मुख्यमंत्री डांगोरिया नमस्ते राहुल जी मैं कृष्णा शर्मा दास हूँ मैं कोलियाबोर LYC के जनरल सेक्रेटरी हूँ साथ ही मैं खुमता असेंबली के दक्षिण गुरजुगंडिया गांव पंचायत की मैं प्रेसिडेंट हूँ सर 1 साल हो गया है मैंने अपने भागदौड़ इस पंचायत में संभालने का लेकिन एक प्रॉब्लम मैं बीच में फेस करती हूँ कि कभी कभार ऐसा होते हैं जब भी हमारे एग्जीक्यूटिव वगैरह बैठे हैं मेरे सारे 10 वार्ड मेंबर के साथ और उसमें आधा जो है वो हमारी महिलाएं हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी डिसीजन लेने पे उन लोगों को बहुत दिक्कतें महसूस होती है क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं उनके घर वाले हैं इसमें इंटरफेयर करते हैं वो चाहते हैं कुछ लेकिन उनके घर वाले चाहते हैं कुछ तो उन लोगों को बहुत ही तकलीफ महसूस होती है क्योंकि हमारी सरकार ने हम महिलाओं को बहुत आगे लेके गया है देखने को मिला है और बहुत सी सुविधाएं हम लोगों को प्रदान किया है लेकिन अभी भी हमारी जो गांव अंचल की महिलाएं हैं इस जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है मैं आशावादी हूँ आप हमें ऐसा कुछ भी सॉल्यूशन देंगे और हम लोगों को सहायता करेंगे कि आने वाले दिन में ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा नहीं होंगे हमारे महिला फिर से आगे बढ़ेगी और वो सच्चाई में इंडिपेंडेंट होगी थैंक यू सर तो काफी क्वेश्चंस पूछ लिए तो मैं नहीं तो भूल जाऊंगा तो 2-3 का तो जवाब दे देता हूँ चल रहा है ये वर्किंग और ये ठीक नहीं चल रहा है कौशल ठीक चल रहा है ठीक है बहुत बहुत स्वागत आप सबका थोड़ा मैं लेट हो गया ये माइक ठीक से चल रहा है या इसमें आवाज अजीब सी आ रही है यू कैन हियर मी तो यू आस्क्ड अबाउट शुड आई स्पीक इन हिंदी और इन इंग्लिश हिंदी तो अभी आपने हैंडलूम की बात की और आपने अपने कॉलेज के बारे में बताया यहाँ पे सिर्फ महिलाएं हैं तो मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ आप बाहर आदमियों को ये मत बताइए नहीं तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे मगर जब तक लोकसभा में और विधानसभा में आधी महिलाएं नहीं दिखाई देंगी
तब तक आपकी जो आवाज सुनाई देनी चाहिए वो नहीं सुनाई देगी। और आजकल हिंदुस्तान में क्या होता है, जैसे गोगोई जी ने कहा कि हम सुपर पावर की बात करते हैं, बड़ी बड़ी चौड़ी बातें करते हैं कि हिंदुस्तान सुपर पावर बन जाएगा, हिंदुस्तान तेजी से आगे निकल जाएगा, सबको पीछे छोड़ देगा। सही बात है, मगर आज मैं डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी में था और मैंने एक लड़की से पूछा कि जब आप बस में जाती हैं आपको डर लगता है या नहीं? उसने कहा मैं जब बस में चढ़ती हूं मुझे डर लगता है, मैं रात को चलती हूं तो मुझे डर लगता है, मैं यहां जाती हूं तो मुझे डर लगता है। जब तक हम महिलाओं को जगह नहीं देंगे और जब तक हम महिलाओं को सेफ्टी नहीं देंगे, जब तक हम महिलाओं को इज्जत नहीं देंगे, जब तक हम उनकी आवाज सुनेंगे नहीं। आवाज सुनने का मतलब ये नहीं कि हम यहां आ गए और आपकी बात सुन ली। आवाज सुनने का मतलब है जब तक हम उनको पावर नहीं देंगे। राजनीति में यही होता है, या आप लोकसभा विधानसभा में आपकी आवाज है या फिर नहीं है। तो सिस्टमैटिकली मैं ये काम करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी में, महिला कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस में महिलाओं को प्रधान लेवल से विधानसभा लेवल, लोकसभा लेवल, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मैं सब जगह महिलाओं को बैठाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों की दृष्टि लंबी होती है, आप लोगों में पेशेंस होती है, आप लोग जल्दी गुस्सा नहीं होती हो, आप में बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं। आपने कहा जब आप दिल्ली आएंगी मुझसे मिल पाएंगी, जरूर आ पाएंगी। आप सिर्फ वहां पे कौशल बैठे हुए हैं, उनको आप पकड़ लीजिए और उनसे कह दीजिए कि मिलना चाहती है, हम मिल सकते हैं। सिर्फ एक बात है, मेरा दौरा काफी होता है तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आप दिल्ली आ गए और मैं असम में हूं, मैं कहीं और हूं, ये हो सकता है। और कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है? हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है? Sir. And our honorable minister and our dearest Rahul Gandhi ji, I am very glad to meet you. I am from Titabo constituency, which is our CM Tarun Gogoi ji constituency. I am retired professor. You are retired professor. In what did you chemistry. teach? Chemistry. Oh, complicated subject. My son Ansuman Soikia, he is working in your election commission, okay. youth election commission. But I always carry one tension. He is married, I am pensioner. How can he manage his future? No money. Only DA and lodging he is found. From my pension, how can you manage my family? I hope you take about this matter. And about 50% women seat, it is yet not approved from in cabinet, though Parliament House decision, reservation, not 50%, 33% in Parliament. 30%, and you hope 50%. No, 50% we have to make it. Make it. Over time, we have to make sure that Our, ladies go in. Many efficient ladies in Assam, but I can see that. But they have no any platform. So I hope you saw the road. Yes, How she come. exactly. That is what I want to do. Thank you. Thank you. Thank you. Respected You didn't. Rahul Gandhi ji. Your name? Sir? Your name? Lavanya Soikia. Sir, sir, this side please. Sir, Sir, this side please. Which side? sir, I am Mausumi Bora, member of the Anchalik Panchayat, 36 GP, Juhat LSE. My question is that Assamese women are not secured in any one place. Not secure. Not secured. Quite large number of women molested
killed and kidnapped by human devils. Human devils. Devils, Crap. human devils. So, how will preserve and safety of women? Well, And you can take care of this woman. well, And a message go to central government through Rahul Gandhi ji. okay. Thank you, sir. I think there are two answers to that question. The first answer to the question is how you protect women and give them security in Assam physically, and I think Chief Minister is better a person to answer that question than me. Second way of thinking about that question is women will get security when you construct a society where women have respect, where women have space, and where women have an equal voice as men. So I think there are many ways in which you can do that. For example, in Uttar Pradesh, I run a program of self-help groups where we have almost 1 million women who are connected to banks, and when they get connected to banks, when they have financial independence, they tend to become more confident, and they tend to become more productive. So that is one way of doing it. Second way of doing it is ensuring that when someone does something against a woman, that there is a punishment, that there is a penalty. So any violence against women should be severely punished. But I think specifically how in Assam women can be made safer, that I think Chief Minister would be better placed to answer. We have here many, Rahulji, we have here many representatives from the social organizations. Yeah. So they want to ask you something. Hello, sir. Hello, sir. Ma'am, in line we can do without interruption. Good evening. Good evening. I am Ambalika Senapati. I am from Sishu Sarathi, Guwahati. It's an organization working in the disability sector. So my question to you today, Mr. Gandhi. Have I met you before? Have I You seen have you before? met my colleague in Delhi during the protest in the last 1 week. Okay, of yes, fortnight. exactly. Yeah. So my question to you today is this: that in the wake of the disability bill, the new bill, being not placed before the parliament, what is the stand of your party as far as, and I mean, how is disability included in your party manifesto? And I would also welcome a comment on the statement that inclusion of disabled people, and especially women with disabilities, in all mainstream sectors, especially of development and other sectors, is really a far and distant dream, especially because they are not a vote bank, and because, you know, they are not represented in the government. I would like your comment on that also. We tried, I don't know, should I answer in English? We had 6 or 7 bills in parliament which were very powerful bills. There was a number of them on corruption. There was a disability bill. There was a bill for SCs, and because the opposition did not let the parliament function, we could not pass those bills. What she's asking me is, what are we going to do with those bills? There's a discussion on in government right now with the Prime Minister and the Congress President and the senior leaders of the Congress Party to take some of those bills and to pass them as ordinances. So to make them laws through ordinances. We are working on that. We are checking the feasibility of it and whether it is possible to do or not, but I'm pretty confident that the disability bill, we have a good chance of getting the bill operationalized through an ordinance route. You know, you mentioned the point that disabled people are not a vote bank. Actually, my philosophy is that if we want to build this country, we have to use everybody in this country. There are some politicians who will go to one community and say, I am for you, and will go to another community and say, I am not for you, right? Our opposition, for example, claims that they are against a particular religion, right? I think that is wrong politics. I think what we should be doing is, whether we are talking about women, whether we are talking about rich people, poor people, disabled people,
I think we should be trying to give everybody a space in this country, because everybody has an opinion, everybody has value, everybody has something to contribute. And I am against the politics of saying that, sorry, you have no place in the conversation. That's why I come and hold conversations like this, where I can listen to different opinions and different viewpoints. Respected and our beloved AICC Vice President Rahul Ji. I am Jasmina Islam, General Secretary APCC. Sir, your vision to make India better, we are already inspired. But yesterday's your speeches, we are much more inspired and encouraged. Sir, All India President Madam Sonia Ji has stressed much more to uplift the women of our country. She wants to bring the dynamic ladies from different sides, and especially in politics, and that is why the bill of 33% of women reservation was brought. My question is, can we expect the bill to pass? Well, Number one, sir. And number two, it is a very important question, sir. Actually, in fact, we the ladies are very much deprived in our society, in the especially in politics, sir. Sir, though we are coming from a very strong background, from a strong political background, we have capability, we have ability, we have everything, and we have done much more works in APCC and everywhere in our offices. Even at the last moment, some selfish persons turned out us. And sir, we are very upset to say this. Here, they know from where I have come. My father is an veteran MLA and district presidents also. But continuously, from three terms, we like me, most of us, sir, don't get the political space. Political space. Sir, it is my request that we should not, especially with the ladies who are progressive, who are dynamic, who are progressive, who are dynamic, they are suppressed, they are dominated by the men folk. Sir, I have earnest request to do something, sir, for us. I think the question about women's reservation. Come on, Rabo. One second. And also, all of them cannot come from that side. We have to go to everybody. So let's give the mic back. Let's give the mic to the person who should have the mic. So 1 second, let me just answer the question. तो आपने women reservation bill की बात की, नहीं बैठ आपने women reservation की बात की, और दुख की बात है कि इस सेशन में हमें women bill पास नहीं करने दिया. ऑपोजिशन के लोगों ने सपोर्ट नहीं दी और इसलिए बिल पास नहीं हुआ, मगर हम इस बिल को 100% पास करके आपको दिखाएंगे. 100%, not 90%. We will pass this bill. One second. We're talking. Don't worry, we'll come to you. And जो महिलाओं को जगह देने की बात है पार्टी में, टिकट्स में, इसीलिए मैंने यहाँ महिलाओं की मीटिंग की है और जो पुरुष हैं उनको बाहर रखा है, क्योंकि अगर पुरुष आ जाते हैं तो फिर आपकी बात सुनाई नहीं देती. आपको मैं सिस्टमैटिकली आस्ते पार्टी में और विधानसभा लोकसभा में एक एक करके आस्ते अपॉर्चुनिटी दिलवाऊंगा. आप इसके बारे में बिल्कुल मत घबराइए.
Sir, may I have your Namaskar. attention, please? Namaskar. I'm Nasreen Habib. I work for a magazine called Eclectic Northeast. You have often spoken about giving power to the people, to women in particular. But Rahul, there are so many women in Manipur who have stood naked and protested against a draconian law. And I'm sure they feel so powerless to do that. You know, that's an act that a woman would, that would be the last resort. So what is your stand on AFSPA and how, you know, how it has affected the lives of so many women in the Northeast? I'm not going to go into the specifics of AFSA in Manipur and in other parts of the country. That's a complicated issue, and that is for the Prime Minister and others to discuss. But I'll tell you my view as far as democratic principles are concerned. I am of the opinion that solutions in this country come from democratic processes. Solutions in this country come from allowing people freedom and giving them space to say what they want and listening to them. I don't think solutions in this country come from using force, using violence against people. That's my belief. I think the biggest success in this country has been the use of democratic principles, has been the use of freedom, has been the use of love and peace. And I think that is what we should be promoting. There are times where you might need to use force. There are times, I'm not saying there is never a time when you have to use force. But I think solutions will only come from conversations. Solutions will come from listening to people and having discussions with them. I don't think, it doesn't make me happy that there is anybody in this country who is feeling uncomfortable or feeling happy or feeling oppressed. That is my personal position. You've in Assam, I've said this a number of times. Assam mein you used to have violence. And for how many years was the insurgency here? How many years did you have violence? 25 or 30 years. Did the violence go away because of violence, or did it go away because people started to talk? When discussion begins, because nobody fights without a reason. I don't believe people fight without a reason. And I think the solution will always come by talking to people. It will always, where you can look at Assam, you can look at Punjab, you can look at Mizoram. The solution has always come when two sides have sat down, discussed things and said, okay, here is a compromise solution. So I think that is what we should work towards. Will your views remain the same when you will be the Prime Minister, sir? Well, I cannot tell you the future, but I have, see, it's not a question of my views. Wherever I look around, and if I look at the history of this country, I do not see solutions coming from violence. Can you tell me one incident where a solution for this country came through violence? I cannot remember even one instance where we were violent towards somebody and we got a solution. You know, so I personally believe that the more you talk, the more you listen, the more you give people space, the more solutions come. हाँ, तो इन्होंने कहा मैं कह रहा था कि असम में इंसर्जेंसी थी, प्रॉब्लम था और 20-25 साल 30 साल चला और अंत में जब शांति आई तो मैंने उनसे पूछा शांति हिंसा से आई या बातचीत करने से, एक दूसरे की बात सुनने से आई? तो उन्होंने कहा कि एक दूसरे की बात सुनने से आई, बातचीत करने से आई। और यही मैं कह रहा था कि हिंदुस्तान में हिंसा से सल्यूशन नहीं आता है, हिंदुस्तान में अहिंसा से, प्यार से, बातचीत करने से आता है। शायद दूसरे देशों में हिंसा चलती हो, मुझे मालूम नहीं, मगर यहाँ पे प्यार से काम होता है। और गांधी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी कहती रहती है शांति से क्रांति, शांति से क्रांति, तो ये हमारी फिलॉसफी है। और उन्होंने कहा कि अगर आप
प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपको ये आप अपना जो अपनी सोच है इसको बदल देंगे। तो मैंने उनसे कहा नहीं, क्योंकि ये मेरी सोच है, मगर मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये सोच चलती है, इससे काम होता है। ये आपकी भी सोच है और ये हिंदुस्तान की सोच है। देखिए, दो तरीके के लीडर होते हैं। एक लीडर होता है जो पूरा का पूरा पावर अपने लिए लेता है, ठीक है। आपको हिटलर का उदाहरण देता हूं। वो सोचता था कि पूरा देश उसके लिए बना है और पूरी शक्ति उसके अंदर से आती थी। सबसे ज्यादा होशियार वो था, सबसे ज्यादा काम वो कर सकता था और वो सोचता था कि जर्मनी को वो ही बदल सकता था, उसकी सोच थी। और दूसरा तरीका का नेता है गांधी जी, ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरा तरीके का नेता है गांधी जी, जो सोचता था कि उसमें कोई शक्ति नहीं थी और हिंदुस्तान की जनता में पूरी शक्ति थी। तो उनका काम, उस लीडर का काम था कि जनता की शक्ति का प्रयोग करे। इसलिए वो अहिंसा की बात करते थे, इसलिए वो सब लोगों को एक साथ ले जाते थे। और अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास देखें तो ये 3-4 हजार साल से चल रहा है। जो भी हमारे नेता, बड़े नेता हुए हैं, चाहे वो बुद्ध भगवान हो, अशोक हो, अकबर हो, गुरु नानक हो, और असम में भी बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे, हाँ, शंकरदेव साहब। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने लोगों को शक्ति दी। और जब लोगों को शक्ति देते हैं तो मजा आता है, देश का फायदा होता है, प्रगति तेजी से होती है। और जब एक व्यक्ति अपने आप में शक्ति डाल लेना चाहता है और पूरी की पूरी शक्ति चाहता है तो फिर नुकसान होता है देश। अब सब यहीं से हो रहे हैं, एक दो उधर से भी कर लेते हैं। So, we are talking about myself, Jahnavi Goswami. I am the president of Indian Network for People Living with HIV/AIDS. We met it before also in Delhi for the Women Conference. And because we are talking about regarding the Women Reservations Bill, Women Reservation Bill has to be the constitute in our country. But why in our party, in the Congress party, not shown that without passing the bill, why we are not able to reserve the 33% or 50% for the reservations? What? हाँ बोलो, sorry. I'm talking about it. We are talking about that the reservation of bill, the women's bill and reservation 33%. Why our party, the Congress party, is not showing without passing the bill? Why the Congress is not shown that the 50% reservations for women? Why should we wait for this? The bill should be passed in the parliament. Why not do it in the party? Yeah. Why we are not going to do that party? Because. And I'll second one other things, because I worked in the HIV field. We are not seeing for last 10 years the HIV bill is not passed. HIV bill? Yeah. And what is the HIV bill? That bill includes the treatment, it includes the health facilities, that include the stigma and discriminations. That bill is laying down for the last 10 years in the parliament. It's in the parliament? Yes. Oh, I didn't know about this. I can check. I can look into this. It's been not passed in the last 10 years. We are fighting for it. We are protesting for the long time, but it is not Well, happened. you should have come to me. And this is my request to you, because we are in front in an Assam's. Being as Assamese women, I feel that I think after you are going back, you try your level best to pass this bill. Okay. As soon as possible. The first, जो आपका पहला सवाल था, एक सेकंड, जो आपका पहला सवाल था कि कांग्रेस पार्टी में 50% रिजर्वेशन क्यों नहीं कर दिया जाए एमपी और एमएलए की सीट्स में, क्योंकि अगर हमें एमपी और एमएलए तैयार करने हैं तो हमें उससे पहले पार्टी में थर्ड टियर पे लोगों को तैयार करना है। अगर हम डायरेक्टली बिना तैयार करे लोगों को एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ा देंगे तो चुनाव हार जाएंगे।
थोड़ा प्रेपरेशन करने की जरूरत है, वो प्रेपरेशन हम करेंगे और फिर उन महिलाओं को MP और MLA का चुनाव लड़ाएंगे। मगर ये हमारा इंटेंशन है। आप थोड़ा समय मुझे दे दो, फिर देखो क्या होता है। Rahul ji, can we go to the other side? Sir, one question this side. आ रहे आपके पास आ रहे हैं। Respected Chief Minister Assam, respected Rahul Gandhi ji, AICC Vice President, हम जोरहाट डिस्ट्रिक्ट महिला कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी। हम अभी असम का महिला इतना आगे बढ़ गया, हमारा चीफ मिनिस्टर जी ने इतना सुविधा दिया, यह बहुत आगे बढ़ गया और इसीलिए महिला लोग आगे अभी आप पूरे हौसला बढ़ के आगे आ गया। हर सभा समिति में महिला आ गया और अभी आप आ गया। हम इतना हौसला बढ़ा, हमारा महिला को इतना हौसला बढ़ा, हमारा इतना अच्छा लगा। आप प्रधानमंत्री बनिए, आप हमारा असम का महिला को याद कीजिए, ये हमारा आशा है, हमारा शुक्रिया है। आपको धन्यवाद। अब मैम यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। Respected Rahul Gandhi ji, first of all, I would like you to welcome to Assam, especially to Jorhat. So, when you talk about women empowerment, women emancipation, the first thing that comes to my mind is women entrepreneurship. I am a research scholar. My name is Mansha Borlekumi under Dibrugarh University. So, when you talk about women entrepreneurship, then we see that the UPA government and also the Assam government have taken various steps for women entrepreneurship. In Assam, we have various types of schemes so that the women are empowered, so that they can run their family well, so that they can make their children more nourished. I would like to name a few of the schemes. In Assam, we have like poultry keeping, beekeeping, piggery and all that funds are given from the government. But from my point of view, when I think only poultry keeping, beekeeping, piggery, will it help to the women to entirely be empowered? I mean, there are very practical difficulties when you talk about these schemes. So I think that to be empowered entirely or totally, I think industry is very important. So I suggest that there should be small industries. I don't say medium scale, I say small scale industries which should be run totally controlled, managed only by women. And employment should also be there, only women should be employed. Suppose if a small industry is undertaken or taken up where 50 women are employed, from those 50 women, more 100 families can be upgraded. But you mean private industry which is only women or government? No, sir. See, if I say the tribal areas or the rural areas, the women of those areas are not that much capable. They are not financially sound so that they can bring up private industries in big sense. So small scale industries should be taken up from government fund. Government should give special funds for only small scale industries. Besides these, the poultry, beekeeping and all. Private industries it's on a big scale, lots of investment is required. So I suggest that in the election manifesto that your government is going to prepare, I suggest you that you keep special provisions for this women small scale industries, especially for the tribal areas, rural areas, not only for Assam but all over India. So another point I would like to draw your attention. Where is Kaushal? You write that down. So another point I would like to draw your attention. So you know, most of the people in the rural areas, I mean the women in rural areas, they are mostly engaged in household chores. And the most important thing in household chores is water. Like from drinking to washing to everything, water is required. No doubt your government, some government have taken a variety of too many water supply schemes, but water has not reached from door to door. Now, even now, women travel far places to bring water in a dry season. They are like, water is also not properly purified or contaminated, you can say. So I suggest that water supply scheme should be made better. It should be made better. And also, sir, SHG bank linkage program should also be made more specified. SHG bank linkage programs are full of complications which a simple lady, mostly illiterate lady, cannot understand.
So if you can simplify Simplify. the SHG bank linkage, probably it will be. I think your suggestions are very good. Thank you, sir. Yeah. Thank you. I think most of the things you are saying I agree with. Yes, sir. But I think if you give women Okay, sir. financial linkage Yes, sir. and you give them financial support and you train them in entrepreneurship, that's also a very powerful thing. Yes, sir. Now, when you see the SHG, we are all speaking about SHG, but the concept of SHG has not been completely successful. This is because the linkage programs are very But low. you come to Uttar Pradesh and I'll show you a successful SAG program. Definitely, sir, definitely. There are exception cases. I agree to that. But now, as a research scholar, when I go to visit places, when I do my research, I see that the funds are not properly available. People go once, twice, thrice. Women from their houses, how many times, sir, they can go to bring the funds? You come and see the work that I'm doing in Uttar Pradesh. Surely, sir, surely. They have a difference of opinion there. They have a difference of opinion. I think this side. नमस्कार हमारे सर छोटे से हम प्रश्न है हाँ माननीय हमारे मुख्यमंत्री असम का तरुण गोगोई डांगरिया और सम्मानीय विजय कृष्ण खंडी सांसद हमारा माननीय असमित कम ना ठीक है हमारे एक छोटा सा प्रश्न है सब कुछ ठीक है हमारा महिला शक्ति बहुत है अभी आप जैसे आप हमारा बहुत शक्ति दिया है हाँ हमारे आप भी हमें बहुत शक्ति देते हो हमारे सरकार पूर्ण रहेंगे फिर हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे फिर हमारे एक प्रधानमंत्री मगर उनसे आप पूछो आप उनसे पूछो एमएलए महिलाएं कितनी बनेंगी आप पूछो उनसे कितनी महिला एमएलए बनेगी मैंने पूछा है एक छोटा सा प्रश्न करेंगे लेकिन जैसे 50-50 हम लोग ने जैसे अभी 50-50 जैसे संविधान में भारतवर्ष संविधान में 50-50 महिला को दिया है लेकिन अभी मंत्री भी देना चाहिए बोलो तरुण गोगोई जी से बोलो हमारे राणा गोस्वामी बहुत पावरफुल आदमी विधायक है उनको अच्छा वाला ये मंत्री देना चाहिए तब हमारा काम अच्छा से होंगे गोगोई जी को बोलो गोगोई जी को बोलो सर देंगे क्योंकि नहीं देंगे ইয়াত সকলোৱে জানে ইয়াত অজন্তা নেওগে বহি আছে পিডব্লিউ মিনিষ্টাৰ ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়া মহিলাক দিছে উলিয়াই লওক আজি আসামত যিমানবিলাক ৰাস্তা হৈছে যাৰ কাৰণে যিমান হৈছে এই মন্ত্ৰী আছে এই অজন্তা নেওগ ইয়াতে বহি আছে दो तो मेरे पास बैठी हुई थी वही बैठ रहा और আজি আমি যিবিলাক খুঁটাই হওক মুগা হওক আজি মই সেরিকালচার এখন আজি ইনস্টিটিউট কেলে খুলিছো এই মহিলাবিলাকৰ কাৰণে মহিলা ইউনিভাৰ্চিটি আজি কেলে গৈ বিচাৰিছো কোনোবাই হৈছে তার সার্টিফিকেট কোর্স থাকিব উই আর ওপেনিং এ উইমেন ইউনিভার্সিটি দেয়ার ইজ সার্টিফিকেট কোর্স ডিপ্লোমা কোর্স and even the postgraduate even a doctorate and there are a lot of schemes even I am introduced a scheme even beauty care also yeah even Assam I know the beauty care about this lot of industrial also even henna painting in the hands you are doing everything yeah large number of girls today they are engaged in beauty in your marriage and everything you know now you go to beauty parlor everybody goes so our girls are doing I have introduced at a time lot of people mukh haisile je chief minister ebla ki koy they say laugh at me I say what type of chief minister he is talk of beauty care somebody facial I say all are they doing I am providing largest number of employment by doing all these things other skill also handloom one tribal her mother is wearing the handloom saris and magda zibla egara ki miris wale kora tribal women here everywhere and everywhere tribal like handicraft bahut bhal kori ase they are doing very well in handicraft and I am encouraging them also missing ei kok deuri ei kok tiwai kok aji eta kiman dress book kiman dekhisu yare design kiman hoise I have started lot of, I can talk but I don't want to talk. No but they are asking different question Gogoi ji yeah they are saying how many women MLAs are they going to be
Definitely. You see, I am the first man who is trying to give more and more. But problems are there, as you know. I don't say I am in favor of the women, but the problems are there. Yeah. I'm a little partial to the women. There's no doubt about it. And মই যিমান পাৰোঁ women দিয়াতকৈ মই কৈছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট তেওঁলোক যদি চাকৰি দিওঁ অকল women দিলে হ'ব क्या क्या वो did- Supposing মই এগৰাকী womenক মন্ত্ৰীও বনালোঁ, thousands women বিলাকে কামো পোৱা নাই, উপাৰ্জনো নাই, সেইটো লাগে নে মন্ত্ৰী লাগে? क्या 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 हाँ? Huh? What type of jobs? They want one minister and thousands of jobs. Yeah, that's also true. But you see, আমি automatically পাব। আজি এতিয়া gradually পাব। আজিতো 50% পাই আছে হেৰি। Now we are getting, Slowly, and we are slowly. doing good. Gradually we will get it. Nobody can prevent it. কেইবছৰমানৰ আগত 33%ও ভাবিব পৰা নাছিল। At least you are getting 30%. মিউনিচিপালিটিয়াত হৈছে, আজি পঞ্চায়তত হৈছে, সেলফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকত হৈছে, এভৰিৱেৰ। চ' বেছি দিন নাই, ৰাহুল গান্ধী আহি আছে, মহিলাবিলাকৰ দিন ভাললৈ আহি আছে। क्या what did he say? Sir, welcome to Assam and especially to Jorhat. Sir, actually I'm from eastern part of Jorhat. This morning when you were interacted with the students of Don Bosco, at that time I saw that you told about you told that the main obstacle of Assam's development, the connectivity problem. So I was watching that program, and connectivity government has a lot of scheme on that Prime Minister Sarak Yojana and NREGA and all this. No doubt that government has taken a lot of steps. But my problem, my request to you for the development of that progress, for connectivity development, it should be a bit fast. Yeah. Actually, sir, it take a lot of time. Yeah. And I don't want to blame anybody actually who are presented here. Actually, the thing is the Bogeyville Bridge, who is going to connect Dibrugarh Lakhimpur, it has started, the construction has started in 2002, maybe 21st April. It's almost 12 years. And sir, it will finish before 15th of December. 15th. No, I don't know. Please, I'm sorry, sir. Just an example, sir. No, but Actually, you're right. yeah. You're right. Just an example. I'm not going to blame him. Please, sorry. I'm sorry for that. Yeah. So actually, my request is the progress should be Speed it up. Yeah. It should be speeded up. Or in case of bridge or whatever, I'm not concerned about the roads and all. It should be done Yeah. with a high priority. I agree with you. Yeah. I agree with you. Yeah. And another thing is that our people, 80% people, they depend on agriculture. So I want to request you, being a future Prime Minister, we are hoping that, we are expecting that. So please give more stress on agricultural development, sir. And But I believe that agriculture in the eastern part of the country, especially rice growing, has had a big improvement over the last couple of years. And today when I was driving, I saw everywhere rice fields. So you're doing quite well in agriculture, it seems. But we want to go with Punjab and Haryana. Actually, they're quite rich in that field. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you. I think last evening. 2 questions. Good evening. One question and then last Mr. one. Rahul Gandhi. Good evening, everybody. মই So we'll do তিয়কৰ 2 more questions. এগৰাকী সাধাৰণ মহিলা বাইদেউ অলপ হেল্প কৰি দিব, মোৰ কথাখিনি বুজাই দিব, মোৰ সেৱা গ্ৰহণ কৰিব। মই এগৰাকী সাধাৰণ মহিলা, প্লিজ Saroda Group of Company customer, or please one package please return one package. লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগত আমাক এটা পেকেট মাত্ৰ দিয়ক, আমি নহ'লে আমাক মানে আমি মৃত্যু হ'বলৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আমাৰ লগৰ বন্ধু বহুকেইজনে আত্মহত্যা কৰিছে, আমাৰ বহুত টকা আমি ছাৰ And they lost money. হয়, আমি ছাৰ হাজিৰা কৰিছিলোঁ, মাটি ৰুই ধান দাই ছাৰ ডিপজিট কৰিছিলোঁ। হেল্প মি ছাৰ,
প্লিজ कितना? How much money did she invest? মই অসমীয়াত कितना पैसा? 50,000 কাষ্টমাৰ মেম অসমীয়া মই বুজাব নোৱাৰা কাৰণে এখন আপোনালৈ মেম নাম লৈ আহিছিলোঁ প্লিজ হেল্প মি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ পিতৃ এইটো CM ছাৰে আপোনাৰ এইখিনি লৈছে কাগজটো তেওঁ কৰি দিব Come, Rahulji, we have more questions on the other side. माननीय Microphone. ठीक है, रो मत. माननीय राहुल जी और हमारे यहाँ असम के नेतागण माइक्रोफोन तो कर माननीय राहुल जी प्लीज इस तरफ थोड़ा नजर दीजिए कहाँ हैं आप? इस तरफ मैं डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जयपुर गाँव से हूँ नाहरकटिया समझ से प्रोटी बैडो के वहाँ से आज यहाँ आके हमें बड़ी खुशी हुई पहले तो बहुत थकान थी मगर आपके चेहरे ने हमें प्रफुल्लित कर दिया और आप भी बहुत थके हुए हैं इसीलिए हम आपके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं आप भी प्रफुल्लित रहे और भाभी प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम आपको ही देखें मेरा एक सुझाव है कि हमारे असम में वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी नेतागण महिलाओं के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं और आप भी केंद्र के द्वारा जाके हमारे असम में और इसके लिए नज़र दें महिला उद्योगीकरण के लिए तथा पर्यटक जितने स्थल है वहाँ की उन्नति के लिए आप अच्छी तरह से अपनी ओर से नज़र देके हमें कृपा करें आप जो कह रहे हैं वो करके दिखाइए हम आपके साथ सदा रहेंगे धन्यवाद One more question. नमस्कार राहुल जी इस तरफ हेलो सर मैं आपसे एक सवाल एक बातें आपको कहना चाहती हूँ सर मैं नाजिरा हमस्टी से आया हूँ और मैं नाजिरा के असम नागालैंड बॉर्डर गैलेकी से हूँ और मैं एक्स ट्रीजर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ जो असम की चाय टी गार्डन लेबर से बिलोंग करती हैं सर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे जो एरिया है उसमें हमारे टी गार्डन और वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो दरिद्र सीमा रेखा से नीचे हैं वो लोग पढ़ाई करते हैं सर लेकिन हमारे वहाँ पर देखा गया है कि वहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए कोई अच्छा कॉलेज नहीं है और वो कॉलेज नहीं होने की वजह से दूर दराज के इलाकों में उन दरिद्र लोगों को जाके पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है और वहाँ पर जो स्पेशली जो टी गार्डन के जो गर्ल्स है वो उससे नहीं कर पाते हैं तो मेरा यह हार्दिक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप उस बॉर्डर एरिया के हमारे जैसे जो भी बॉर्डर एरिया है उन एरिया के जो बैकवर्ड कॉलेज है जो बैकवर्ड रीजन में जो सिचुएटेड है उनके कॉलेज के उनके हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए अगर आप कोई अच्छी सी स्कीम ले तो हमारे वहाँ के लोगों के साथ साथ हमारे टी गार्डन कम्युनिटी के भी जो भी लोग हैं वो आप पे हमेशा आभारी रहेंगे सर अगर मैं आपको कहता रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन ग्रहण कीजिए धन्यवाद अब माइक ले लो Rahul ji from नहीं बाकी लोगों से भी बात other side. और one last question from Piref come all the way from Guwahati. So good evening. Namaskar. Thank you for this platform. I'm an IT entrepreneur. Can you speak in Hindi so everybody understands? Sorry, my Hindi is too poor. I won't risk it. Okay. I'm sorry. I Okay, hope no someone problem. can translate. The best and the brightest from this sector leave Assam. I would like to, recommend incubation centers in our engineering colleges so that people are encouraged to start, take up startups and organize some sort of seed fund for them. So we have, entrepreneurship, more entrepreneurship in this area. So Okay, what that's I a good have to say. suggestion. Thank you. Would you like to translate that? Hindi? Would you like to translate what she said? I would just like to add on to what she has said. I'm a management professional with 25 years of experience working in an institute of entrepreneurship and working at the grassroots. And what I want to say is that most of the time, the issues which emerge at the grassroots level, particularly which has relevance to Northeast, do not get transported or do not get reflected in the policy issues with policy decisions which are taken at the central level. How do our experience get some exposure in the policies which are taken place, because it's very, very important. A lady was just talking about handloom. Unlike rest of India, in Assam, 50%, more than 90% of women are handloom weavers. So there has to be something specific for Assam. So which otherwise all the policies we don't have an answer to that. Okay, we'll have to conclude. Yeah. Okay. I need to. Rahul ji has to leave for Delhi now, and he has to fly back. Unfortunately,
Unfortunately, I have to go back. Otherwise, I'll have a problem back home. I'd like to conclude also. I'd like to say let me also conclude. नहीं, अब मुझे भी थोड़ा बोलने दीजिए. আপোনালোকে অকমান ৰাহুল জি কথা শুনি লওক তেখেতে কিবা এটা 2 मिनट में बोलूंगा बस. हाँ, শুনি লওক आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं. मैंने गोगोई जी से थोड़ा मजाक किया, मगर असम में महिलाओं के पास मुझे लगता है काफी शक्ति है. ये काफी शक्ति है और आप काफी इन्वॉल्व हैं. मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बातचीत कर बहुत अच्छा लगा. उन्होंने कहा कि हम थके हुए थे और अब हम में एनर्जी आ गई. मैं भी थोड़ा थका हुआ था, मुझ में भी आपने जोश डाल दिया. तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं. और ये पहली मीटिंग है, मगर ऐसी और मीटिंग भी मैं करना चाहता हूं आपके साथ. अगली बार आऊँगा, आपके साथ और बातचीत करेंगे. आप सबका बहुत 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 धन्यवाद. नमस्कार.